Hi kids, this is Divya Chandwani and I welcome you all on Let's Crack 9th and 10th CBSE, and this is not a regular session. Today I am here for a special announcement, and today I am going to share a special news with all of you. That's actually a good news for all the students of CBSE class 10th and 12th. So those kids who were not attending their classes regularly, okay, or those who have unfortunately missed their online classes because of some technical issue, because of internet, or because of any other problem, I have a good news for all the students of class 10th and 12th, those who are preparing for their CBSE board exams. So I have a good news for you. Stay tuned with me. I'll give you the news in 5 minutes. Okay, this video is not going to be a long video. It's just a short video with some information. So this is my introduction. My name is Divya. I have done my BTech in electrical engineering. I have more than 2 years of teaching experience, and those who want to purchase Unacademy subscription, this is my awesome referral code. That is Divya10. So when you will apply this code, you will get an instant discount of 10%. So these are the benefits. Before going to the benefits, I would tell you what we are going to discuss today. I would tell you about the relaxation on attendance of CBSE class 10th and 12th students. Yes, kids, you heard me right. CBSE is going to give you 15% relaxation on attendance of CBSE class 10th and 12th students. So please stay tuned with me if you want to know more about it. Okay. So these are the benefits that you all can easily get when you will subscribe to an academy. So first is daily live classes, second is live tests and quizzes, third is structured courses. If you want to prepare for any exam, you will get a structured course for it. Next is unlimited access. That means you will have access to all the multiple educators teaching on this platform, plus all your doubts will be solved. Okay, so now kids, what you have to do is just download an academy learning app, choose गोल्ड में करिए CBSE class 10 and click on get subscription button. And this is our subscription plan. Kindly go through it once. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप परचेज कर सकते हैं 12 months, 24 months or 36 months, but do not forget to use Divya 10 to avail a discount of 10%. So these are the prices without discount. When you will apply Divya 10, you just have to pay these prizes. Okay, one of these prizes. Okay, chalo. So now without any further delay, let's quickly reveal what's the special announcement. So as I have already told you, it's a CBSE announcement, and it's about 15% relaxation on attendance of CBSE class 10th and 12th students. So yes, kids, you have heard me right. CBSE इस बार क्या कर रहा है, as it was mentioned earlier that CBSE ने 75% अटेंडेंस कंपलसरी रखी है ऑनलाइन क्लासेस में भी, बट उसमें बच्चों आपको 15% का रिलैक्सेशन मिल रहा है. वो रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, दैट आई विल टेल यू. So Central Board of Secondary Education CBSE has decided to give 15% relaxation on the attendance of students who will be appearing for the classes 10th and 12th board exam in 2021. तो जितने भी बच्चे जो 10th या 12th में हैं अभी और 2021 में अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको सीबीएसई ने डिसाइड करा है 15% का रिलैक्सेशन देने का. ओके, ये रिलैक्सेशन क्यों मिल रहा है आपको? दिस रिलैक्सेशन ऑफ अटेंडेंस विल बी स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेड ऑन स्टूडेंट्स who have been unable to take the online classes during the COVID-19 लॉकडाउन. सो यस किड्स, अगर आपके स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप वो किसी रीजन से नहीं देख पा रहे थे, कोई टेक्निकल इशू था, कोई आपके पास नेट नहीं था, या आपके एरिया में नेटवर्क का इशू है, सो इन दैट केस यस यू विल गेट अ 15%, you will get 15% relaxation. Okay, बट अगर आपके स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे, so then you won't be applicable for this relaxation. Okay, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बच्चों, फटाफट से देखते हैं. तो 15% of relaxation on attendance will be given to students who are unable to join the online classes due to technical reason. तो अगर आप किसी टेक्निकल रीजन से ये ऑनलाइन क्लासेस जो आपके स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे थे वो आप नहीं देख पा रहे हैं, so you will get 15% relaxation. To appear in CBSE 10th 12th board exams 2021, you should have at least 75% attendance in school. ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों, आई विल टेल यू दैट. ओके, सो इट मीन्स जो ये आपको 15% रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये थ्रू आउट द ईयर के लिए नहीं है. इट इज ओनली
applicable for the students. It is applicable for lockdown and unlock, for lockdown to unlock 4 only. Okay, that means the lockdown started in April. It started in March, but your session begins in April, so it will be considered, since April. तो अप्रैल से लेके अनलॉक 4 कब कंप्लीट हुआ है बच्चों? सितंबर में. दैट मीन्स अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो पीरियड था आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस का, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें आपको 15% का रिलैक्सेशन मिलेगा. तो अगर आपकी वहां पे 75 के जगह 60% अटेंडेंस भी है तो वो भी कंसिडर की जाएगी. ओके, लेकिन कब से कब तक? अप्रैल से लेके सितंबर तक. ओके, स्टूडेंट्स मस्ट नोट दैट there there were lockdown and unlock 4 from April to September. ठीक है, तो सितंबर के बाद अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो वो सीबीएसई कंसिडर नहीं करेगा. अगर अप्रैल से लेके सितंबर तक आपकी अटेंडेंस 60% है तो सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल उसको कंसिडर करेगा. तो आपके पास अभी भी टाइम है. अगर आपकी 60% अटेंडेंस है अप्रैल से सितंबर तक बच्चों, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको ट्राई करना है कि आपकी अटेंडेंस मोर देन 75% हो, ताकि जब इनका एवरेज निकाला जाए जनवरी में, सो यू विल बी एप्लीकेबल फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स. जनवरी में आपकी फाइनल अटेंडेंस कैलकुलेट की जाएगी. तो अगर आपकी अप्रैल से सितंबर तक अगर आपकी attendance 60% है, so there is no problem. Earlier it was 75%, but now all the students who are in class 10th and 12th and those who are preparing for CBSE board exams 2021, they will be given a 15%, relaxation from April to September. That is, from lockdown to unlock 4. Okay, so during this time, the students dependent only on online studies. During this period, the students who have not been able to mark their attendance in school will be given exemption in attendance. तो जिनकी भी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे बट कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से, कोई भी नेटवर्क इशू की वजह से या नेट ना होने की वजह से जो अप्रैल से सितंबर में क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनको सीबीएसई ने 15% का रिलैक्सेशन देने का डिसाइड किया है. ओके, the board has so far allowed the exemption of attendance in case of sickness also. तो अगर आप 60% से भी ज्यादा रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आपके घर पे कुछ और serious issue था, for example someone died or maybe if you were not well, in that case exemption can be given, but you have to submit necessary documents in your school so you can get more relaxation. For example, if anyone died, or if you were suffering from COVID, or if you were suffering from um, सिकनेस, प्रोलॉन्ग सिकनेस जो बहुत टाइम तक चलती है, तो उस केसेस में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट कर सकते हैं. हो सकता है कोविड को वो लोग फिर भी कंसिडर ना करें, बिकॉज कोविड कैन बी क्योर्ड इन 15 to 20 days. तो हो सकता है वो कोविड को कंसिडर ना भी करें, बट अगर दूसरी बीमारियां हैं जो काफी लंबे समय तक चली हैं तो आप उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल में सबमिट कर सकते हो. और अगर ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हुई है तो यू कैन सबमिट death certificates in your school also, and you will be given exemption by your school. Okay, तो अगर कोई प्रोलॉन्ग डिजीज थी, अगर यहाँ पे किसी की डेथ हुई है तो यू कैन सबमिट इट. अदरवाइज अप्रैल से सितंबर तक अगर आपका 60% अटेंडेंस भी है तो सीबीएसई उसको कंसिडर करेगा. प्लीज ट्राई स्टूडेंट्स की अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में जो आपकी अटेंडेंस हो वो मोर देन 75% हो, जिससे कि अगर वो आपका एवरेज भी निकाले तो वो बिल्कुल सही बैठे और आप आराम से अपने बोर्ड एग्जाम्स दे पाओ. Okay, so according to board, this examination is only for 2021 board examination. Last and the most important point, ये हर साल applicable नहीं होगा. It is only for 2021 board exams. It is mentioned by Sanyam Bharadwaj, who is the controller of Central Board of Secondary Education, and he said that many children could not do online classes due to COVID-19. So in such situation, he is giving, or CBSE is giving exemption in school attendance. Okay, so now kids, this was all about the announcement. I hope you are maintaining your attendance, because else you won't be able to get your admit card. So please try to
Please try to maintain good attendance in October, November, and December. If you have 60% attendance from April to September, then to try to maintain more than 75% of attendance in these 3 months so you can easily get your admit card in January. Okay, so thank you so much. It was all about this special announcement. All the best for your board exams. And if you have any queries, you can ask in the comment section box. Do not forget to like the video and hit the bell icon for more notifications. Okay, and if you want to purchase an Academy subscription, do not forget to use this awesome referral code, that is Divya10, and you will get an instant discount of 10%. For more quizzes and special classes, you can follow me on Unacademy Learning app also. My name is Divya Chandwani. You can follow me there. Okay. Thank you so much, kids. Quickly like the video and use my code. Bye bye. Thank you. See you all.